Hello everyone, this is me Diksha, and today I am going to start one step more अपनी personality development process के अंदर, and I am going to start Savers technique from tomorrow, right? Let me introduce Savers techniques to you. Savers is all S for silence, A for affirmations, V for visualization, E for exercise, R for reading, S for scribbling. Scribbling means journaling. Yeah. And I'm going to wake up at 5 every morning from tomorrow, and this is the challenge which I'm going to take for the next 30 days, right? So today is 24, right? And from 25 for the next 30 days I'm going to do this. And right, I have studied this in morning miracle book 5 a.m. club. I am a morning person, so मुझे लगता है कि I should start with this. And but मैं ये मॉर्निंग में नहीं करने वाली हूँ. 5 बजे उठ के मैं मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी. बट बाकी सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू डू एट नाइट, बिकॉज जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ मॉर्निंग के अंदर, तो आई प्रेफर स्टडिंग, राइट. 3 घंटे के स्लॉट में मुझे पढ़ना पसंद है, तो आई यूज़ टू कंप्लीट माई स्टडीज़ अर्ली मॉर्निंग. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज इन द नाइट फ्रॉम 9, दैट्स इट, फ्रॉम 9 to 10:30. So if you wanted to join me on this journey, let me know about it. Bye bye.